Hello everyone. So, so you can ask any questions if you have regarding the construction industry about your career or what next job you're supposed to learn and all. And somebody watching me for the first time, I'm Akshay Kamath, having around 8 years of experience in the construction and in the teaching. So I train a lot of civil engineers, and I've trained more than 1.5 lakh students across the country on my Udemy and through my Civil Brains app. So if you have any questions, you can put it in the comment box. Meanwhile, I'll be explaining you few things about my courses where I've given you certain free courses. You can always enroll in those free courses, and also we'll be taking up certain important topics whichever I feel that has to be explained. Yeah, you can ask questions in both English and Hindi language, whichever you're comfortable. Yeah, so ये सारे मेरे कोर्सेस अवेलेबल हैं मेरे ऐप के अंदर बाय नेम सिविल ब्रेन्स। ये उसका स्कैनर है। आप इससे क्या करिए, यू कैन डाउनलोड the app through this particular link, and I have given a free course. I've given a free course. It's for 7 days validity. Definitely check it out. And these are the students who are enrolled in my complete courses like construction manager mastery and all. He is one of my students who got placed in a PSP company for a 4.2 lakh package. And these are the students who are enrolled in my courses. He's one of my student who had a 6 months of experience, got a package of 7 lakh LPA. And these are the reviews that you find when students enroll in my courses and all. या सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हो. एंड टू स्टार्ट विथ, दिस इज माय ऐप, माय नेम सिविल ब्रेन्स. मैंने आपको स्कैनर दिया है, आप स्कैनर से इसको डाउनलोड करिए. तो ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है मेरे ऐप के अंदर. लाइक कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर इज माय कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे हम हर एक चीज़ पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक लेके. अगर आपको चेक करना है कि कैसे पढ़ा, तो डेफिनेटली मेरा फ्री कोर्स है, 7 days का वैलिडिटी है, यू कैन चेक इट आउट. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है. QA/QC हो गया, साइट एक्सिक्यूशन हो गया, एंड इसके बाद ड्राइंग रीडिंग का हो गया, एंड इसमें आपको इवन प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारे कोर्सेस आपको इसमें मिल जाएंगे. ठीक है. या सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट आउट. एल्स लेट मी स्टार्ट विथ सम ऑफ द टॉपिक फॉर टुडे. या या ठीक है, तो ये वाला टॉपिक लूंगा. अरे साइट इंजीनियर का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, 30 तारीख तक मिल जाएगा. मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट हो चुका है. कल तक पूरा बीम का हो जाएगा, 30 तारीख तक स्लैब तक हो जाएगा. मतलब मैंने आपको ये वाला RCC का पूरा मैं आपको 30th तक अपडेट कर दूंगा. एंड जो फिनिशिंग के है वो आपको नवंबर 1 वीक तक हो जाएगा. मेन इज आपका RCC का है, फिनिशिंग में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा. मेन इज मेरा RCC का बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे, इसलिए RCC का हो जाएगा. फिनिशिंग का भी कर दूंगा, पर मेन इज RCC. ठीक है. तो देखो एक बीम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है, आई एम शोइंग यू वन बीम हियर. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर बीम? सो समबडी, आप इसमें मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो. ठीक है, आप साइट पे चले गए एंड दिस इज अ कंडीशन, एंड आपको अभी अप्रूवल देना है कि इस बीम का भी लोअर डाउन करना होता है. राइट, इफ यू नो हाउ टू डू द साइट एग्जीक्यूशन, एक बार पूरा बीम का रिइंफोर्समेंट बांधने के बाद इस बीम को नीचे लेना होता है. पर नीचे लेने से पहले आपको साइट पे बुलाया गया है और पूछा कि चलो मैंने अपने पूरा बांध के रखा है, तो इस बीम में क्या क्या मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई. आई विल गिव यू 2-3 सेकंड्स, आई मीन आई विल गिव यू अराउंड 1 मिनट. ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस बीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. अगर आप एक साइट इंजीनियर होते, वुड यू अलाउ द बीम टू लोअर डाउन, or you would suggest them some changes? Yeah, people, there are 16 people online, so if you feel कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है इस वाले बीम में, definitely you can put. Yeah, lapping is done at column and beam junction. Yeah, lapping is done at column and beam junction, but out of that only one is correct, the other is right. इसमें जो लैपिंग किया है वो सही है, दोनों का लैपिंग एक ही जगह पे किया है. ठीक है, पर इसमें से एक सही है एक गलत है. कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है? ऊपर वाला सही है या गलत है, या नीचे वाला सही है या गलत है? Which one? What he told is correct. So the right answer is, ये जो ऊपर वाला किया है ना वो गलत है, क्योंकि ऊपर में what will happen is, yeah, हाँ, actually yeah, I'll answer it. So usually what happens, the bending moment diagram of this is always at the top you'll be experiencing a negative bending moment. So since you'll be experiencing a negative bending moment near the top, you should not do a lapping here. Okay, always the top bar should be done, lapping should be done at the center. So if this is my top, this lapping they should have done it here,
or somewhere here they should have done the lapping for the top. In case of bottom, we don't have problem. In case of bottom, what happens, the maximum bending moment will be at the center. Okay, the maximum bending moment will be at the center. So bottom bar you should not lap at the center, you should lap it within L/4 junction. So this lapping is correct, but there is one thing. This is good according to SP34, or if you are following IS456 code book, according to that this lapping is good. But again, if you are following IS13920, that is ductile detailing, then the code says that after the 2D distance you have to do the lapping. So if this particular building was done according to IS13920, then definitely the bottom lapping is also wrong. In that case, you should leave a distance of 2D, whatever is the depth of the beam, 2 times of that you should consider, and from there you have to lap it. Okay, so these things you should understand where you are doing a building and how the detailing has been done. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, Irfan Sheikh, what you told is correct, but this is the right. This is how we are supposed to answer. Okay, so all these other mistakes. Again, this kind of mistakes you usually see in the local constructions and all. Okay, so being an engineer, you should know how to take a decisions on the site, how we need to rectify and all. Yeah, okay, Paras Sharma, hi. Paras, I think you had asked few questions. That drawing you had said. Anyhow, I'll check it. Okay, एक दो दिन में check करके आपको update करूँगा. ठीक है. Okay, this is one thing. I'll ask you one more question. Which is primary beam and secondary beam in this? Yeah, I'll answer your question. Okay. Yesterday I was busy. Today also it's not possible. So maybe tomorrow or day after tomorrow, within 2-3 days, okay. So identify which is a primary beam and a secondary beam here. I'll give you option. Let's say this particular beam, this beam number is 1, and let us say this particular beam. This beam is, this number is 2. This is beam number 1 and this is beam number 2. इसमें से प्राइमरी बीम कौन सा है, सेकेंडरी बीम कौन सा है? ओके, I'll give. हाउ टू बिकम प्लानिंग इंजीनियर. सी, टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, जो जो चीज आप करते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, हर एक चीज आपको नोट डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो पूरा बीम का मैंने इनको रीइंफोर्समेंट दिखाया था. अभी कितना लेबर काम करे, 3 लेबर इधर काम करे, तो पूरा रीइंफोर्समेंट बांधने के लिए कितना दिन लेते हैं, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है. एक बार आपने बीम का नोट डाउन किया, जब स्लैब का लगाते हैं, जब स्लैब का लगाते हैं तो स्लैब का भी कितना दिन लेंगे लोग रीइंफोर्समेंट लगाने के लिए. एक बारबेंडर, मान लो ये बंदा बारबेंडर है, इसके पास एक हेल्पर है, तो एक दिन में कितना केजी का सरिया बांध सकते हैं बीम में, स्लैब में, सारे चीज आपको नोट डाउन करते जाना है. जब आप ऐसे नोट डाउन करते चले जाओ, आपके पास प्रोडक्टिविटी बनेगा. इससे आप क्या कर सकते हो, आपको प्लान कर सकते हैं कि अगर ये बंदा एक दिन में 250 केजी का स्टील बांध सकता है, तो आपके पास बीबीएस बना रहेगा. तो बीबीएस में मान लो लेट से 2000 केजी का स्टील बांधना है, अगर एक दिन में 250 बांध सकते हैं, तो 2000 बांधने के लिए कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेंगे. तो एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ के जाएंगे तो 9 दिन लगेगा. तो आपने क्या किया, ड्यूरेशन निकाल दिया. समझ में आ रहा है ना? इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं, ना एमएसपी सीखना है, ना आपको प्राइमवेरा सीखना है. तो फर्स्ट ये सारी चीज आपको साइट लेवल से सीखते आना है. साइट लेवल से सीखते 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 एक बार आपने सीख लिया, फिर आप एमएसपी और आपको प्राइमवेरा सीखना है. दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस, तुम लोग सॉफ्टवेयर के पीछे चले जाते हो कि मैं सर एमएसपी सीखना है, प्राइमवेरा सीखना है, एमएसपी अच्छा है, प्राइमवेरा अच्छा है. तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, बट सॉफ्टवेयर को क्या इनपुट देना है वो आपको पता होना चाहिए. 9 days कहाँ से आ रहा है वो आपको देखना है. अगेन इट्स अ बिग टॉपिक. So this is how you want to become a, this is how you should become a planning engineer. But definitely you don't have to worry, with my courses I can help you reach there. तो these are the courses what I offer. ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स है, इसमें आपको प्लानिंग के लिए मैंने कोर्स बना के रखा है, बट आपको सीक्वेंस में सीखना है. रैंडमली डायरेक्टली प्राइमवेरा एमएसपी वाले कोर्स में नहीं जाना है. यहाँ पे हमारा एक कोर्स है लेवल 4. इस लेवल 4 में आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको बेसिक प्लानिंग कैसे करना है. ठीक है, इस तरह से सारे चीज, प्लानिंग फॉर एक्सटर्नल वर्क, मंथ वाइज क्वांटिटी कैसे निकालना है, मंथ वाइज बल्क मटेरियल क्वांटिटी कैसे निकालते हो, ये सारी चीज, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज यहाँ पे पढ़ाते हैं. इसके बाद हम आपको एमएस प्रोजेक्ट पढ़ाते हैं. एमएस प्रोजेक्ट पढ़ाने के बाद प्राइमवेरा, प्राइमवेरा के बाद आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हम पढ़ाते हैं. बट बिफोर आई टीच दिस, आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज आता है, जो है साइट का एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीओक्यू बनाना, समझ में आ रहा है, बीओक्यू बनाना, एस्टिमेशन करना, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना, ये सारी चीज आपको आना है. तो अगर ये सारी चीज आता है, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ प्लानिंग वाला कोर्स. ठीक है, fine. Yeah, what you people told is correct. 2-3 people have answered that this beam,
ये जो बीम है ना 1, ये आपका प्राइमरी बीम होता है, ये आपका सेकेंडरी बीम होता है। ओके, ऑलवेज द लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ये जो आपका सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम से आपका प्राइमरी बीम के ऊपर आता है, प्राइमरी बीम पे जो लोड आता है वो जाएगा इस कॉलम के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर। तो जब आप साइट पे काम करते हो, दिस इज एंटायर स्लैब लेआउट, तो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट मेरा प्राइमरी बीम है और प्राइमरी बीम के ऊपर मेरा सेकेंडरी बीम आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जितने भी बीम्स है ना, सारे आपके प्राइमरी बीम्स है। प्राइमरी बीम्स वो होते हैं जो कॉलम टू कॉलम जाते हैं। सो ऑल दिस बीम्स कैन यू सी, दे ऑल आर माय कॉलम टू कॉलम गोइंग, सो दिस इज माय प्राइमरी बीम, whereas this beams are my secondary beam। अब secondary beam में दो beams है, एक है simply supported, एक है आपका propped beam। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला जो है, इसका एक एंड कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है और दूसरा एंड इसका यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, तो ये सारे आपके सेकेंडरी बीम्स रहेंगे। तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर आके बैठेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप साइट पे जाते हो ये सारी चीज आपको देखना होता है। बट अगेन छोटे मोटे, नॉट ओनली छोटे मोटे साइट, कुछ ऐसे भी साइट है जहाँ पे इससे गलतियां किया जाता है, सेकेंडरी बीम के ऊपर प्राइमरी बीम को लगाया जाता है एंड ऑल। So again, being an engineer, you should know what is the right construction practice and all those things. ठीक है? Yeah. So if you have any other questions, आप पूछ सकते हो। इरफान शेख, beam number 1 is primary and it is from column to column, and beam number 2 is secondary as it is from beam to beam. Yeah, correct. What he told is correct. ठीक है? So any other questions you have? If you have any other questions, you can ask. Uh, Apart from that, what else? What else will do? There is one drawing here. We'll check out this drawing. ये ड्राइंग में क्या है? ओके, ये वाला नहीं चाहिए। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी फॉर एनी टॉपिक। इफ यू वांट आई कैन टेक अप दोस टॉपिक्स। ओके, हाँ, ओके, वेट just 1 minute, I'll stop, I'll do this thing. Okay, my screen is visible, no? So best college for MTech in structure engineering. See, all colleges are good. To do MTech, what you have to do is 2 3 conditions you have to apply. One is you should try to do MTech from NIT, IITs or good private or government colleges where the placement is good. Identify those colleges and try to identify it somewhere which is close to your place. If you can do this, you are selected the best college. Simple. MTech in construction management is good. See, everything is good, depends what is your interest. MTech in construction management is also good. Structure engineering is also good. Geotechnical engineering is also good. Environmental is also good. So depends what is your interest. Suppose if you're someone who likes execution, who likes planning, who likes other things and all, definitely you can look for construction management. If you're someone who likes structure analysis, strength of materials, RCC subject, you like to do bending moment, shear force calculations and all, you can look for structure engineering. If you're someone who is passionate for soil, who likes to study about the soil, you like subjects about soil mechanics and all, then you can go for geotechnical. Somebody who likes about the road, who likes about traffic and all those things, you can do MTech in transportation engineering. Getting my point? No. So it all depends on your interest. There is nothing like good or bad. Everything is good. It's all relative. मैं ट्राई कर रहा हूँ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जॉब मिले, लेकिन मेरे को एट द एंड क्यूए किसी वाला जॉब ही मिला। मैनेजमेंट वाला जॉब मतलब क्या होता है वो? व्हाट इज दैट मैनेजमेंट वाला जॉब? ओके, व्हाट इज दैट मैनेजमेंट वाला जॉब? Pratik, you can charge for a G+1. So usually what happens, people charge it for square feet, like 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees per square feet they charge. So based on that, you can charge it. Otherwise, you can even charge in a lump sum. For a G+2 building, people charge around 40, 50,000 rupees. So based on your project, based on the,
difficulty level of the project, you can charge. Okay, sir, can structure engineer get salary as same as IT guy like 20-30 package? See, initially though it's not possible. The reason initially why it's not possible is even if you do from NIT, IITs and all, on average the package what they offer you is from let's say 6.5 lakh is the average package what you get in the MTech field. That's the average package. So it can even go up to 11 lakh package. I'll show you few of the proof, because as long as I don't show you the proof, it's of no use. Yeah, so proof is in front of you. These are the students, uh, okay, who is from IIT. Okay, so Reliance paid them 13 lakh CTC. Only one student got that. Only one student got that. Okay, and which company pay you? Like Reliance pays you, Atkins pays you, WSP, they all pay you. Okay, and then on average you get around seven. This is one of my student who got a 7.5 lakh a package in MTech. So there are two students in his batch. It seems one got 13 lakh a package, but only very few will get. Since I told 6.5 is the average package that you get, so you can expect a package from 6.5 to 7-8 lakh package. That is the initial stage. Now it all depends on what level of skill set you are bringing. Okay, so when somebody tell me, sir, if you 20-25 lakh package can I get, there are companies which are offering you, but depends on what kind of skill set you are bringing. You see here, he was asking for a 4 lakh, I mean 4 year experience, and they were ready to pay 12 lakh. Okay, and even okay, these are the few things. So these are the reality what I'm showing you. Now coming to a question, 20 lakh and all, one of my friend is having roughly 2018 we did MTech. He's having roughly 7 year of experience, who has worked in top companies. At present he is getting a salary of 20-21 lakh rupees. So after 6 year of experience he's getting 20-21. He's working in WSP. So he is the one who is earning highest as far as I know in structure engineer job. Okay, 21 lakh with 7 year of experience. So that is what I know. Apart from that, there are companies who can pay you 25, 30, 35 lakh, but they all ask you like 8, 10, 12 year of experience, and you should know what kind of knowledge you are bringing. See, somebody will not pay you 20, 25 lakh salary unless you have that level of skills. You're getting my point, no? So there is one company by name Force. If you want, I'll show that. LinkedIn. LinkedIn, there is a company by Force, I feel. So a few days back, not few days back, around 1 or 2 months back, I had seen their vacancy. They were ready to pay 25 to 30, I guess, 25 to 30 lakh salary. But again, that is also like, that is all like, having good experience, whose knowledge is excellent, that is how it is. So this is that company Force Structural Engineers Private Limited. They were paying around 25-30 lakh rupees for some job as a structure design job. Okay. Huh. So there are companies. Of course, you cannot match the salary with IT people, because IT, what happens is a different the way those people work, because they are taking people from India and doing the work outside. We are doing a foreign work, no. So you are paid in dollars and all. That is why they get that 20-30 package and all. Yeah. But even in the construction also you get, but again in the construction, to reach that 20-30 lakh a package, you should have minimum, let's say 12, 15, 18, 20 year of experience. There are people earning 1 crore also, but they all are like vice president and all. Okay, vice president means he's having almost 30-35 year of experience. Yeah. Project coordinator and manager. Okay. So Tabrez, you be active on LinkedIn. There are many jobs which will come. So based on that, you have to apply. As structure with own consultancy, we can earn up to 50 lakh per annum, like Vivek Gupta. See, Vivek Gupta and all, they are all like, Vivek Gupta is that IES guy. IES Vivek Gupta, you're telling. He is having a company in Gurgaon, right? Vivek Gupta. Of course, they all have very good knowledge, no? He has done MTech from IIT. Then he has worked in Indian Railways, and apart from that, he worked as a faculty in 𝗏𝗍𝗐, and now he's running his own consultancy in. He's running his own consultancy in which is that Gurgaon, I feel. But definitely they can earn. Yeah, but it takes so much of efforts, because
Structure consultancy and all, what happens? You get very less fees compared to site PMC jobs, or the, whatever architects will charge the fees. No, that much fees and all structure engineers don't get. They hardly get 5 to 6% of the total cost of the project. And also we don't have union also, like architects and all, they have their own body. Got it? No, we structure engineers don't have it. We don't have an engineers bill and all. So here there is no, like, if somebody is ready to do for 4 rupees, another guy is ready to do it for 3 rupees per square feet. So that is how it is. So in the Gulf, there is a good demand for a planning engineer. So see, again, you go to my course, this particular course, that is my construction manager mastery course. In that there is a one course by name planning, this thing Primavera course. So the Primavera course in my app is taught by a guy working in Saudi. He is a planning engineer. This particular lecture here. Okay, so he's working in Saudi. He's working for that NEOM project. Okay, this particular here, this Primavera, he is having around 7 years of experience. We have added both lectures. One is Primavera up to G+2 building, we have added a lecture, and even for a high rise building also we have taught you how to do the this thing, project planning. Again, if you're a fresher, don't enroll in this course directly, only the Primavera course. You should learn step by step. All these lectures are taught by him. He's having around 7 years of experience in planning. So planning has a good scope in Middle East countries. Yeah. Hmm. Okay. Any other questions you have? Let me know if you have any other questions you can ask. If there is no question, you can suggest any topic which you want me to take. I can take that also. If I know, I can take. I cannot take any random topic which I don't know. Uh, You can put some topics which I know, I can take it. If I don't know, I'll say I don't know. Else, what else you want me to take? Hmm. Okay. Okay, we'll do one small calculation. If it's available, I'll do. I'll teach you how to do the this thing. Number of stirrup. MBA किस course करे in civil field? MBA. अरे तुम क्या क्या करोगे? उस दिन तुम पूछ रहे थे दुबई में क्यूए किसी के, आप ही हो ना रोहित चौहान? उस दिन तुम पूछ रहे थे क्यूए किसी का कोर्स बताओ दुबई में करने के लिए। आज तुम एमबीए में आ गए, तो करना क्या है तुम्हें भाई? वो बताओ। एमबीए करना है, देखो क्यूए किसी में सब जाने, कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू आर द सेम गाय, बट इफ यू आर द सेम गाय टेल मी। उस दिन तुम क्यूए किसी बोल रहे थे, अभी तुम एमबीए करने आ गए। स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। ओके, सी मैं ऐसे ओरली अप्लाई एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन दिखाऊंगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं ओरली एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज स्क्रीन को दो, यू कैन सी अ बिगर पिक्चर ऑफ मी। सही है ना? दिख रहा है? हाँ, फाइन। सो या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। देखो यार, प्रोजेक्ट मैनेजर सब तुम एमबीए करके नहीं बनने वाले हो, कभी भी याद रखना। डिग्री से कोई मैनेजर नहीं बनेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास अच्छे से साइट का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट नॉलेज, प्लानिंग का नॉलेज, सब कुछ होना जाए है, जान सब कुछ होना है। सब कुछ होने के बाद लेट्स से 8-10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तब जाके तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद तुम चाहे तो कोई एमबीए कैसे डिग्री करो, एमबीए से तुम कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनने वाले हो, ठीक है? तुम्हारा सिर्फ बीटेक, एमटेक या डिप्लोमा का डिग्री काफी है। रेस्ट यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको मिनिमम 8, 10, 12 साल, 10 साल के ऊपर ही लगेगा। 10 साल में कम ही बोल रहा, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने काम किया था, मेरे सीनियर को और मेरे साइट मैनेजर को 14 ईयर का एक्सपीरियंस था। 14 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद वो बंदा साइट मैनेजर है। उसके बाद वो सीनियर साइट मैनेजर बनेगा। उसके बाद वो लोग बनेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर बनेंगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर बनेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर। अब भी मैं बात करूँ बड़े बड़े कंपनीज लाइक गोदरेज, डीएलएफ एंड ऑल। कल मैंने एक वीडियो देखा था, कोई बंदा है
उसको 6 साल का एक्सपीरियंस हो, प्रोजेक्ट मैनेजर है। देखो अगर कोई बंदा 6 साल का एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो छोटा-मोटे बिल्डर कंपनी में काम कर रहा है। छोटे-मोटे कंपनी में क्या होता है कि इंजीनियर को ना नाम दे देते प्रोजेक्ट मैनेजर और उसका सैलरी होता है 30-40,000। मेरे यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट 2 साल एक्सपीरियंस वाले जो इंजीनियर है उनको 40,000 का सैलरी मिलता है। समझ में आ रहा है ना? सो टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर दैट इज अ लेवल व्हाट यू शुड हैव। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, ऑलवेज स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर। ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर। जब आप साइट पे काम करते हो हर एक चीज आपको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आज आपने एक्सकवेशन किया, तो उस एक्सकवेशन करने के लिए आपने कितने एक्सकवेटर को लगाया, ठीक है, फाइन। अब जितने एक्सकवेटर आपने लगाया उसने कितना क्यूबिक मीटर का सॉइल निकाला, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। कितना टाइम दिया, सुबह 9 बजे को स्टार्ट किया, शाम के 7 बजे तक आपने काम किया, तो कितना क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन किया, कितने एक्सकवेटर को लगाया, एक एक्सकवेटर को एक एक्सकवेटर ने कितना काम किया, उसमें कितना डीजल चला गया, और ड्राइवर का खर्चा कितना था, सब कुछ नोट करते चले जाओगे। तो आप प्लानिंग इंजीनियर को दो चीज के ऊपर फोकस करने, कॉस्ट एंड ऑल्सो प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी। हो गया एक्सकवेशन, फिर तुमने पीसीसी डाला। अब पीसीसी डालने के लिए कितना दिन लिया, उसमें कितना तुमने लेबर को लगाया काम करने के लिए, कितने लेबर को लगा के उनका कॉस्ट कितना था, उन्होंने कितना काम करके दिया, कितना दिन लगाया, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम आप साइट पे करते हो हर एक चीज आप नोट डाउन करते जाओगे, स्टार्टिंग से एंड तक आपके पास एक पूरा डेटा बना रहेगा। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। एक बार वो सब करने के बाद वही प्रोजेक्ट को आप एमएसपी में प्रैक्टिस करो, आप वही प्रोजेक्ट को एमएसपी में प्रैक्टिस करो। I'll show you one image for that. I mean एक आपको एक्सेल शीट दिखा दूंगा so that आपको एक आइडिया लगेगा कि करेंगे कैसे। Just give me 1 minute. I'll show you one Excel sheet so that no planning का MSP means Microsoft project. I'll tell you planning in a very simple way. If you understand this, there is nothing much required. Just 1 minute. I'll open one Excel sheet and I'll show you what is that. Okay. What is planning? I'll tell you. My screen is not visible. No. Planning is nothing here. See, every day you people plan. Okay. ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू प्लान नो। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप कॉलेज में अभी पढ़ाई करते हो, मान लो अभी कौन सा मंथ है, अभी अब अक्टूबर मंथ है, चलो नवंबर 15 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, आप 7th सेम में हो, तो आपके कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, 6 सब्जेक्ट रहेंगे, तो आप प्लान तो करोगे ना कि अगर नवंबर 15 को मेरा एग्जाम है, आज अक्टूबर 27 है, तो मेरे पास लगभग कितना 18 दिन का है, तो 18 दिन का आप प्लानिंग नहीं करोगे क्या? हाँ, तो आप प्लानिंग करोगे अगले 3 दिन। लेट्स से आई विल टेक सम रैंडम सब्जेक्ट्स। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मेरे को थोड़ा टफ लगता है, मैं 4 दिन दूंगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी 2 दिन काफी है। सर बीएमसीटी 1 दिन में मैं पढ़ लूंगा। सर स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए मेरे को 4 दिन का टाइम चाहिए सर, मेरे को आरसीसी के लिए 4 दिन का चाहिए। तो आपने प्लानिंग किया, कैसे प्लानिंग किया, बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल आपने प्लानिंग किया। ये आपका एक लेवल का प्लानिंग है। फिर आप डे वाइज प्लानिंग करोगे। डे वाइज कैसे प्लानिंग करोगे, जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं आरसीसी के फर्स्ट चैप्टर फिनिश करूंगा, ठीक है ना। फिर मैं 12 बजे से 2 बजे तक लेट्स से आरसीसी के सेकंड चैप्टर करूंगा। फिर लेट्स से 4 घंटे से 6 में उसका रिवीजन करूँ। आपने डे वाइज प्लानिंग किया। तो आपके लाइफ में आप डेली प्लान करते हो। इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड भी आपको ऐसे ही करने। ओनली द डिफरेंस इज मैं आपको एक एक्सेल शीट के थ्रू समझा दूंगा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में व्हाट वी डू। ठीक है, चलो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, अभी दिख रहा है, ठीक हो। कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम ऐसे प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई एक प्रोजेक्ट है, इसको डेट को मैं चेंज कर दूंगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख, ओके। अभी 25/2025 है और ये आपका अक्टूबर का मंथ है, ठीक है। चलो इसको 11 नवंबर का करूंगा, 1 तारीख को स्टार्ट करूंगा। मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, 1 नवंबर 25 को मेरे को स्टार्ट करने, तो क्या क्या काम होता है, फर्स्ट आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटी पता होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्टिविटी कैसे पता चलेगी, जब तक आप साइट पे काम नहीं करोगे लिस्ट ऑफ एक्टिविटी पता नहीं चलेगा। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, फाउंडेशन में अर्थवर्क का काम है, पीसीसी का काम है, रीइंफोर्समेंट का काम है, फॉर्मवर्क का काम है, कंक्रीट फॉर फुटिंग का काम, इतना ही काम होता है। फिर उसके बाद क्या काम होता है, लेट्स से स्टार्टर कंक्रीट का जरूरत नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद अप टू कॉलम लेवल पे, अप टू प्लिंथ लेवल पे मेरे को कॉलम बनाने हैं। मेरे स्टार्टर कंक्रीट रहेगा, रीइंफोर्समेंट का काम रहेगा, फॉर्मवर्क का काम रहेगा, कॉलम का काम रहेगा। फिर आपका प्लिंथ बीम का काम, प्लिंथ बीम में आप बैकफिलिंग करोगे, प्लिंथ बीम का पीसीसी करोगे, उसका रीइंफोर्समेंट डालोगे, फॉर्मवर्क करोगे, कंक्रीट फॉर प्लिंथ बीम और उसका बैकफिलिंग, ये आपका सब स्ट्रक्चर के काम है। 1 नवंबर को स्टार्ट करूंगा। अब ये ड्यूरेशन कहाँ से आता है, ये वाला ड्यूरेशन 30 दिन, तो ये आता है डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब अगर मैंने एक एक्सकवेटर को लगा दिया, अगर वो 8 घंटे काम करेगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक दिन में रफली 160 क्यूबिक मीटर का सॉइल को निकाल सकते हैं।
अब आपके प्रोजेक्ट में लेटर से 1000 लेट से आपके साइड पे लेट से 2000 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करना है। अब 2000 कहाँ से आएगा? कॉस्ट क्वांटिटी एस्टिमेशन से आएगा। तो अगर एक दिन में 160 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन कर पाऊंगा तो 2000 करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 2000 को डिवाइड बाई 160 से करूंगा तो 12.5 का मतलब है 13 डेज। तो एक दो दिन एक्स्ट्रा मान के चले जाएंगे। मान लो एक दिन आपका एक्सकवेटर ब्रेक डाउन हो गया, आपके पास स्टैंड बाय नहीं, तो एक दिन आपका वेस्ट हो गया ना। तो इंस्टेड ऑफ 12.5 एल से 13 के बाद मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, लेट से 15 दिन लगेंगे, तो आई पुट 15 दिन। जैसे मैं यहाँ पे 15 दिन लगाऊंगा तो 1 नवंबर को मेरा एक्सकवेशन स्टार्ट होगा, 15 दिन का टाइम लूंगा, 16 नवंबर को मेरा एक्सकवेशन खत्म होगा। एक्सकवेशन के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? पीसीसी का काम। अब पीसीसी का काम कैसे कब स्टार्ट करो? क्या मेरे को पूरा एक्सकवेशन होने के बाद मेरे को पीसीसी करना है क्या? ऐसा नहीं है। अगर मान लो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो अगर इसका आधा भी मेरा एक्सकवेशन हो जाएगा, मैं अपना पीसीसी का काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल से कि जब मेरा एक्सकवेशन खत्म होगा वहां से लेटर से कुछ 10 दिन वहां से -10 कर दूंगा, 10 दिन पहले आप मेरा पीसीसी को स्टार्ट करो। मतलब 6 नवंबर को मैं अपना पीसीसी का काम स्टार्ट करूंगा। अब पीसीसी करने के लिए कितना दिन लगेगा? आपका पीसीसी क्वांटिटी देखना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा? बीओक्यू से मिलेगा। तो बीओक्यू कहाँ पे रहेगा? आप हर एक प्रोजेक्ट में आपका एक बीओक्यू रहेगा। जैसे इस प्रोजेक्ट में देखो ये वाला एक बीओक्यू है मेरे पास, तो इस बीओक्यू में पीसीसी का क्वांटिटी है मेरे पास। मेरे सब पीसीसी, ये मेरा पीसीसी का क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा पीसीसी, छोड़ दो ये वाला पीसीसी है, नहीं यहाँ पे कोई, हाँ ये वाला पीसीसी है। कितना क्वांटिटी है यहाँ पे? 7.75, बहुत छोटा है। लेट से यहाँ पे मैं 200 क्यूबिक मीटर डाल दूंगा, तो 200 क्यूबिक मीटर का पीसीसी है। तो मैं देखूंगा एक दिन में कितना पीसीसी हम कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट अगेन आई विल कम विद द ड्यूरेशन ईयर। लेट से ये मेरे को 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस सबको प्लानिंग करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेसलाइन शेड्यूल। हमें इसको फर्स्ट बनाना होता है एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्लानिंग इंजीनियर। तो ये सारी चीज आपको सीखना होता है। अगेन इट्स ऑल एक्सप्लेन इन माय कोर्स। करना कुछ नहीं है, यू हैव टू डाउनलोड माय ऐप। मेरे सिविल ब्रेंच का ऐप अवेलेबल है, तो ये उसका क्यूआर कोड है, इसको डाउनलोड करिए एंड चेक आउट माय फ्री कोर्स। इफ यू लाइक इट डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कंप्लीट कोर्सेज में एनरोल करो, स्टेप बाय स्टेप उसको सीख लो। फाइन, ओके हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर बनना सिखा दिया तुमको, तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर प्लानिंग वाला हो गया। माय फ्रेंड हैड अ ब्रेक इन सिविल इंजीनियरिंग करियर ऑफ 4 years and he was into business. Now he wants to come back in civil engineering field. What is the best way? Please suggest. So ask your friend to connect to me. Based on that, I'll suggest. Okay, because I want to know what they have done and all. No, so directly I cannot give any suggestion. First, I want to know what he is doing. Then what happened in the business. Now I want to come back. So I want to know all those things. Based on it, I'll suggest him. Fine. सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ तो मैं स्विच करना चाहता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यू कैन स्विच, नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपको सीख के जाना पड़ेगा बिल्डिंग लाइन एंड ऑल। इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन वेयर यू कैन लर्न, डेफिनेटली माय कोर्सेज आर बेटर। ये मेरा क्यूआर कोड मैंने दिया, मेरा ऐप को डाउनलोड करिए, एनरोल इन माय कोर्स। बट बिफोर एनरोलिंग मेरे से एक बार बात कर लो। आई वांट टू नो आपको करना क्या है। बेस्ड ऑन मैं आपको कोर्स सजेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास कोर्स नहीं, मैं दूसरे जगह पे सजेस्ट करूंगा। ठीक है, टुमारो व्हेन आई विल कॉल या टुमारो, तुम लोग मेरे को 12 बजे के कॉल और 1 बजे के बीच में कॉल करना है। ठीक है, तो आप कौन है वो? अरमान वारिस, यू कॉल मी अराउंड 12 PM। ओके फाइन। MSP मीन्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। डिजाइन फील्ड में डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? देखो डिजाइन फील्ड में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। डिजाइन में स्ट्रक्चर डिजाइन ही होगा ना, तो स्ट्रक्चर डिजाइन में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट विल हैपन, अगर अच्छे अच्छे कंपनीज में जाना है वो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे लिखते हैं कि एमटेक वाला बंदा चाहिए। जब वैसे लिखेंगे एमटेक वाला बंदा चाहिए तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बड़े कंपनी से, MNC कंपनी से, एमटेक इज रिक्वायर्ड ओनली। तो फिर आपको 2 साल के बाद अगर आपको पता चला कि एमटेक करना है, फिर तुम एमटेक करने के लिए भागोगे, इट्स ऑफ नो यूज। तो दैट इज हाउ इट इज। आई ऑलवेज सजेस्ट एमटेक कर लो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन इफ, बट यू हैव टू डू इट फ्रॉम द वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, या रोहित, ये दो दो रोहित है क्या? एक रोहित चौहान रेड कलर का शर्ट में है, एक रोहित चौहान ब्लू कलर का शर्ट में है। ठीक है, ये क्या है? #1 #3 सब आता है, वो क्या होता है? इज बीटेक मैंडेटरी फॉर एमटेक? हाँ डेफिनेटली।
So without BTech, how you will take admission in MTech? BTech is mandatory ना. Without BTech, how you will do MTech? डिप्लोमा के बाद तो तुम्हें डायरेक्टली एमटेक नहीं कर पाओगे. डिप्लोमा के करने के बाद बीटेक करना है, बीटेक के बाद एमटेक होता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क. सो प्लानिंग आई एक्सप्लेन यू कि ये सारी चीज़ आपको प्लानिंग में करना है, तो प्लानिंग वाला मैंने समझा दिया. एंड अगर आपको और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो. और क्या था, टुमारो व्हेन आई विल कॉल हो गया, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है. देखो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, साइट पे काम करना है, सीखना है. कोई डिग्री से आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनोगे, ये सब फालतू के डिग्री होते हैं. हाँ, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी देखे, बहुत सारे कोर्सेज भी देखे, जो बोलेंगे ना प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, अंडर कुछ नहीं बनने वाले हो. ठीक है, टॉप कमेंटेटर्स इन चैट. ओके ठीक है, डन. ओके, तो आपको कुछ मिलता है क्या, प्राइस मिलता है क्या? वो क्राउन सब लगा के रखा है उसने वहाँ पे ऊपर. ठीक है, ठीक है. Any other question? Okay, done. So there are almost 17 people. You can ask any doubts, or if you have any doubts regarding any topic, and put it. Somebody asked about my one. My one किसी ने पूछा था ना, सही my one कुछ बताए. यार my one कुछ नहीं, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनते हैं we generally go with the my one. तो my one का एडवांटेज क्या है कि जो आप नॉर्मल कन्वेंशनल शटरिंग यूज करके करते हो, तो आपको एक एक फ्लोर लगाने में 18-20 दिन लगेंगे. सही है ना? तो 18-20 दिन लगेंगे. तो माइवन में क्या होगा, आप एक एक स्लैब 7 से 10 दिन के बीच में, लेट्स से 7 दिन या 10 दिन में आप एक एक स्लैब बना सकते हो. दैट इज एडवांटेज. एडवांटेज क्या हो गया, जो 20 दिन ले रहे थे आप यहाँ पे 10 दिन में ले बना के दोगे, तो आपने 10-10 दिन का टाइम सेविंग कर लिया एक एक स्लैब में. अगर आपके पास लेटर से 25 स्लैब है, तो 25 × 10 करो, 250. 250 मतलब लगभग 7 महीने हो गया. 7-8 महीने का आपने सेविंग्स कर लिया. आप 8 महीने पहले अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, और 8 महीने आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, तो मतलब क्लाइंट ने या जो डेवलपर ने 8 महीने पहले लोगों को अपना प्रोजेक्ट दे दिया. मतलब 8 महीने पहले इनको पूरा पैसा आ गया. मतलब पूरा पैसा इनको आ गया, मतलब आपका जो बैंक में इन लोगों ने जो लोन लेके रखा है, जो 8 महीने का जो आपको ये पैसा एडिशनली पे करना था, या जो भी लोन काइंड ऑफ, यू पेड इट बैक. सो अभी लोगों को फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो फास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए माई वन इज वन ऑप्शन. अलॉन्ग विद दैट उसका जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छे से आ जाते हैं माई वन में. सेकंड इज नॉट ओनली दैट, कन्वेंशनल में क्या होता था, आपने पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद आप ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क बनाते हो. ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क करने के बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल के चेजिंग, प्लम्बिंग के चेजिंग का काम होता है, राइट. पर माई वन में क्या होगा, एक पूरा वॉल बनता है, पूरा शेयर वॉल या पूरा वॉल बनते हैं. जब वॉल का कास्टिंग करोगे, उसी में आप प्लम्बिंग के फिक्सचर्स, प्लम्बिंग के उसके बाद प्लम्बिंग के फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल के जो स्विचेस, स्विच बोर्ड्स एंड ऑल है ना, वो सब कुछ आप उसी में लगा देते हो एंड कॉन्क्रीटिंग कर देते हो. तो कॉन्क्रीटिंग करने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट काम आपका क्या है, प्लास्टरिंग का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिनिशिंग इतना अच्छा आता है, प्लास्टरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ये सब आपका कॉस्ट सेविंग होते हैं, फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द माई वन. ठीक है, माई वन का कोर्स आई टोल्ड यू दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में मोस्टली आई शुड ब्रिंग अ कोर्स ऑन दैट. इन दैट कोर्स, इन दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. Sir, I actually graduated in BCA, but now since I had to pivot into civil engineering field, your courses helped me a lot. Okay, nice. Graduated in 2021, preparing for government exam, but now I want to do civil job. So what to do? Prepared for. So you have to call me. I'll speak to you. Based on that, I'll suggest you. My number is 809. Don't call me. Sorry, WhatsApp me. Don't call me because I won't pick your call if you call me at random time. So 8095128107. This is my WhatsApp number, Guru. You just WhatsApp me and keep whenever I'm free. Maybe tomorrow, I'll reply you. Hmm? ठीक है. ओ क्या क्वेश्चन था गुरु? ओके, आई हैव डन 2 months एज इंटीरियर साइट इंजीनियर. या यू जस्ट speak to me, I mean WhatsApp me. Based on that, I'll suggest you what you need to do. Okay, fine, fine. So don't we need to cure the concrete or wait for the slab to gain strength, or does it gain enough strength in 7 to 10 days? What is this question about? ओके सर, माय वन कोर्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर में ऐड नहीं होगा, वो क्या है?
माइवन वाला नहीं यार, मैं जितने भी कोर्सेस लाऊंगा वो सब कुछ आपको अगर आपने मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स लिया है, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस, यू गेट एवरीथिंग, ठीक है, यू गेट एवरीथिंग। ओके, okay, so any other questions if you ask, you can ask me. And meanwhile, what we can do is okay, yeah, fine. mm, yeah, if you have any questions you can ask, else I can take some other topic. What topic shall I take? Okay, I'll just tell about few things about estimation also. Okay, I hope my screen is visible. See, when you're working on the construction site, no, every one of you, so try to prepare such kind of Excel sheets and all. Okay, so again, when you learn to prepare such kind of Excel sheets and all, you can easily apply for a jobs as a quantity estimator, cost engineer and all. So this is the entire Excel sheet for a this thing. What is that? It's a residential building where we have done the entire calculation, like for earthwork what is the total quantity, soiling what is the total quantity, sand filling how much is required, PCC work, form work, footing shuttering quantity, footing concrete quantity, then column concreting, column shuttering quantity, and then the backfilling quantity. So in this way what we do, we find out all the concrete quantity and all. Okay, so what we'll find, so again you should know how to apply the formulas and all. So based on that we'll prepare such kind of Excel sheets. So the advantage of creating such kind of Excel sheets is tomorrow if you make any small changes in one of the column, no, entire answer we are going to change. For example, this is a stone soiling work, let us say. So let us say initially they planned will give 150 but later they told no, not 150, we'll make it as 200. So the moment I make it as zero point 0.2, you see all the answers will change. And if I copy the same thing again, okay, see, all the values will change. So this is the advantage of preparing the Excel sheets when you're working on the construction side. So that will help you a lot. So once you prepare such kind of Excel sheets, along with that, everything you have to do, I have taught you for one thing. Similarly, this is the entire residential building I taught you. Then same thing for the plastering also we are going to do. Plastering, painting, everything you have to prepare such kind of Excel sheet. So once you prepare the Excel sheet, again, entire cost will do. Like in footing, how much concrete is required, cement bag, sand, aggregate, total material cost, shuttering cost. Okay, shuttering quantity. Then footing, how much it goes, column, how much it goes, then beam, how much it goes, slab, staircase, everything. Apart from that, how much, what is the total cost of all the cement bags in your project? Sand, how much it is required? Aggregate, how much it is required? Then again, for masonry work, outside plastering, inside plastering, what is the total cost? Total cost, including your cement, sand, aggregate, and all. Okay. So in this, all these things is covered in my course. I'm teaching you all those things here, how it has to be done. Again, all these are your shuttering quantity. This is your first floor shuttering quantity, first floor concrete quantity. Along with that, you'll be doing a beam concrete quantity, then beam shuttering quantity. Once you find out all the concrete quantities and all, then we have to learn to prepare the BOQ and all. So this is the entire BOQ. So in the BOQ, we'll put all these things. Okay, you are listing how much backfilling, how much excavation you are supposed to do, concrete work, how much you are supposed to do, cubic meter, all these things. Everything will prepare. Whatever answers we got, no, that will put it here, and we'll be knowing the rate which is going on in the market. So those rate will put it here. Once you put all the rate, no, we'll finally get what is the total cost of your structure. This is the estimated cost of your project. So these are the things which you need to learn when you're working on the construction side. Got it? Yeah. Sir, please show us all the thumb rule for. See, there is nothing like thumb rule and all these things. Okay, that is all like for a small building. So there is no thumb rule as such. What you're supposed to do when you are working on the construction site, you need to create your own thumb rule. How to create your own thumb rule is very simple. When you're working on a site, try to see the drawings. For example, if you're constructing a G plus 2 or a G plus 3 story building,
We generally take the column size to be 9 by 12, 9 by 15, or 9 by 10. So this becomes my thumb rule. Now, how did I come to a conclusion? I have seen 2, 3 different buildings where they are constructing G plus 2, G plus 2, and G plus 3 building. Or let's say G plus 2, one is G plus 3 building, the other is G plus 4 building. Got it? Now I've seen all the drawings of G plus 2, G plus 3, and G plus 4. The column sizes what I found is 9 by 12, 9 by 15, and 9 by 18. Since I have seen 3, 4 different drawings, I can come to a conclusion that this is a general size of a column that is required for a G plus 2 to G plus 4 building. That becomes my thumb rule. Understood? That's it. This thumb rule will work only for a small residential buildings and all. You're constructing this high-rise building, this thumb rule will not work out. Got it? So that is why thumb rule and all will come through experience. This one person you see in LinkedIn, Google, and all these random YouTube videos. This, take 1% of concrete volume, take 2% of this, take 0.8. All these are nonsense. They don't work in real structure. Okay, so how you prepare thumb rule on your own is whenever you're working somewhere, try to see what is a drawing, what is the size of the footing. Got it. I'll give you one small thumb rule for a beam. On average, in one particular beam, 100 to 200 kg of steel is required. So how did I understand that? I'll show you here. See, I'll go to one of the this thing. Yeah, it is ready. This is a bar bending schedule. Okay. Hmm. I think my screen is, yeah, yeah. So again, this is one of the beam. The length of the beam is roughly 4.7 meter, and it is having a size of 230 by 450. And you see the reinforcement, we are providing a 16 diameter 3 bar at the top, 16 diameter 2 bar in the bottom. Top left extra is 12 of 2, 12 of 2 on the right side, and then 16 diameter 3 bar is the extra bottom curtain. Now we have found out all the kg of steel required. So my top straight bar roughly 30 kg of a steel is required. Bottom straight bar roughly 20 kg, not roughly, exactly 20 kg of steel is required. Top left extra 3 kg, top right extra also 3 kg. Bottom curtain is around 15 kg. Now when you're working on the site and all, you just go behind the number 30 kg, 20 kg. First is you get the feel of that 30 kg, how much are 30 kg weighs. Now add everything, 30 plus 20 is 50, 50, and this 3 is almost 56. 56 plus 15 is 66, 71. Including the stirrup and all, let's say around 90 kg of steel is required. So now I came to one thumb rule. Generally, if the length of the beam is somewhere close to, let's say, 5 meter or 4.8 meter, and if the size is in the range of 230 to 450, and if you're using a combination of 16 diameter and a 12 diameter bar, you can say roughly 80 to 100 kg of a steel is required in one beam. This is a conclusion what I'm going to draw. Similarly, you can take another 2, 3 different beams from that particular project. Try to do all this calculation. See what is the range of steel that you're getting. Once you understand that, that becomes your thumb rule now for this particular building. Now just calculate the number of beams, multiply it by 80 or 100, you got the total weight. That becomes a thumb rule. So that for somebody you have to give an estimate and all, you can give estimate in this way. Understood? No. So there is no rule that 1%, 2% of beam, all those things is, it will not work in real life unless somebody has done a proper calculation. Okay. So this is how you are supposed to do it. So if you do all these things on the construction side, your thumb rules are ready. Okay, Irfan Sheikh who asked this question. This is how we are supposed to do it. Yeah. See, if you want to start a turnkey company, in that case, one is of course you have to do. You should know how to do the rate analysis, and try to see what is the rate going on in the market. So that way you can give a rate to the client. But again, this will come through experience. Once you do one or two project, you will get to know where your money is going, where more money is required and all. So based on that, you can
It's all about like trial and error you're going to do. So first see in the market in your area what rate is going on. Then you do a small rate analysis, see for if any work has to be done. Let's say some excavation work has to be done. See what is the quantity there. Let's say you are taking some 10% of contract, you are taking as a 10% profit or 15% profit. Then do a small rate analysis and see what is the rate that you can come up with. You're getting my point, no? And then you see what other people are offering it in the market. So that way you need to come to a conclusion like what rate you can give it to the client. Okay, Irfan Sheikh, this is done. प्लानिंग इंजीनियर में जाने के लिए से इट्स नॉट अबाउट कितने टाइम का, इट्स अबाउट आई वुड सजेस्ट अगर आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल करोगे स्टार्टिंग से एंड तक, एंड जो जो चीज़ मैंने आपको बोला अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो डिपेंड करेगा आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जो जैसे लेट से वो एक दो 1.5 साल के अंदर खत्म हो रहा है, देन 1.5 साल इज इनफ। मान लो आपको एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जो 2 साल का टाइम ले रहे हैं, पर आपने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया है तो 2 साल इज सफिशियंट। पर उस 2 साल में ये सारी चीज़ सीख के इसके साथ साथ आपको 2 साल में एमएसपी और प्राइमरीरा भी इसके साथ साथ सीखना पड़ेगा। और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें उसी को आपको अपने प्राइमरीरा या एमएसपी में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है 2 साल के बाद जब आप कोई प्लानिंग वाले जॉब में अप्लाई करोगे ना, आगे वाला बंदा पूछेगा कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल, पूछेगा प्लानिंग में है नहीं है, तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस तरह से रेडी करके जाना है कि जहाँ पे आपका साइट का नॉलेज के साथ साथ आप रोज उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके वो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट वन कंप्लीट प्रोजेक्ट आप हैंडल करो स्टार्टिंग से एंड तक, तब जाके यू कैन गो फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का पोजिशन। Okay, see people those who have not subscribed to my channel, definitely subscribe to that, that will help me a lot. And if you have any questions, okay. सर मैंने क्यूएस और कॉस्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना करा है और 1 ईयर का एस्टिमेट इंजीनियर का एक्सपीरियंस भी है, क्या करूँ अच्छी सैलरी के लिए? ये कोर्स कहाँ से किया आपने? क्यूएस और कॉस्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करा है 1 ईयर का, ये कौन सा कहाँ से किया है तुमने? व्हाट इज द what is the construction cost to quote a builder for a multi-story residential building in Mumbai about 1 lakh square? No, I don't have an idea. Mumbai and all, I don't have an idea. क्या आप प्लानिंग का कोर्स ऐड करेंगे फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में? उसमें ऑलरेडी एडेड है ना प्लानिंग का कोर्स, उसमें और क्या ऐड करना है? ऑलरेडी दिस कोर्स इज एडेड, राइट? एमएसपी का भी कोर्स है, प्राइमरीरा का कोर्स है, दोनों कोर्स उसमें ऐड किया है कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में। सो अगेन नो नीड ऑफ एनी कोर्स इन दैट। देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, इफ आई गो टू द कंटेंट एंड इफ आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज, आप लेवल 4 में आ जाओ, ऑलरेडी है, एमएसपी का है, प्राइमरीरा का है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और प्राइमरीरा में प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट तो 2 प्रोजेक्ट हाई राइज का भी है और G+2 का भी है, तो एवरीथिंग इज एडेड। ऑनलाइन कहाँ से किया आपने? देखो मेरे को पता भी चलेगा ना आपने कोर्स कहाँ से किया है, वो भी देखना पड़ेगा कहाँ से कोर्स किया आपने, क्या सीखा है। देखो यार तुम कुछ भी करो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक लेट्स से 25 से 30 हज़ार के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट इन अ गुड कंपनी। फ्यू डेज बैक मैंने एक पोस्टिंग डाला था, ग्लिट्स कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू है बैंगलोर में, इफ यू कैन कम यू कैन गिव अ इंटरव्यू, अलॉन्ग विद दैट आई विल शो यू रिव्यू ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट। ये वाला एक स्टूडेंट है मेरा, पर मेरे को पता नहीं इसका एक्सपीरियंस कितना है, बट इसको 4 लाख का पैकेज मिला था क्यूएस का। सर हाई सर, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे। ये सैंटिको आई मीन सैंटिको नाम से एक कंपनी है जो एस्टिमेटर इंजीनियर का पोजीशन इसको दे रहे हैं। सो दे आर पेइंग हिम अराउंड 4 लाख का पैकेज, 4 लाख रफली कम्स 30 हज़ार। बट आई डोंट नो व्हाट एक्सपीरियंस, उसको कितने महीने का एक्सपीरियंस था या फ्रेशर था, कितने साल का एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, इवन आई फॉरगॉट टू आस्क, मुझे आइडिया भी नहीं है। सो डिपेंड करेगा, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है आई वुड सजेस्ट 25 से लेके 30 हज़ार के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट, या यू कैन एक्सपेक्ट यार। क्योंकि मेरे पास एक और स्टूडेंट है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 30-35 के आसपास मिल रहा है,
डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 25 से लेके 30 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. ओके सर, ऑनलाइन करा था सर. बैंगलोर बहुत फार है मेरी सिटी से. हाँ ठीक है, तो आपका जो सिटी है वहाँ पे आसपास ही आप ट्राई करो, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड कंपनी. ग्लिट्स इज अ वेरी गुड कंपनी. ठीक है. How to do a job abroad after MTech? What are the requirements and steps? How to do a job abroad after MTech? What are the requirements? To do a job abroad, see, to do a job abroad, uh, one is depends like whether you have any reference and all those things that matters. Okay, uh, got it. That is the first thing. Again, requirements is that after MTech, which what MTech you have done? MTech in which field? Structure field, construction management, geotechnical. I want to know that. So, is it getting a job anywhere is if it is abroad, one is of course a reference and through your seniors, if anyone is working, reference your relatives and all through them you have to get a job. Second is you can look for certain consultancies, those who help you in getting a job in abroad. That is the second option. Third is you have to go to those country. Let's say if you're going to Dubai, go on a travel visa for 3 months, stay there, and you can apply for a job. So today I had seen one vacancy, not today, I mean on LinkedIn. I mean, yeah, 2 days back, I'd seen a vacancy. Okay, so they were even asking someone who has come to Dubai on a travel visa can apply for a job. I think today evening I saw that, but it was posted around 2 weeks back. So let me try to find it. Of course, I'll not get it. I know because in LinkedIn, a lot of posts will keep on coming. But let me check it out. Yeah. So this was okay. This was 2 weeks back. That is for a junior engineer, and let me check. Let me check. Yeah. What is somebody's question? सर मुझे ये जानना है कि क्या वॉक इन इंटरव्यू में सैलरी बेटर मिलता है या टेलीफोनिक इंटरव्यू. यार ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग है. डिपेंड करेगा तुम परफॉर्म कैसे करोगे. तुम किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, तुम परफॉर्मेंस से अच्छा नहीं करोगे तो क्या फायदा है. इट इज नथिंग टू विद दोस थिंग्स. इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू. ओके. So this ASBL is one good company in Bangalore. They do a lot of high-rise building constructions and all. So they sometime there is opportunities for a junior engineer and all. So you can subscribe to her channel. She is a HR executive. Connect to her on LinkedIn. So and then yeah, just follow LinkedIn. So you may get lot of vacancies. Okay. Again, you also connect. You can see this guy is chairman of Danube Group. Rizwan. Rizwan Sajan is a founder and chairman of Danube Group. Again, connect to him if you're someone who is looking for a job there. I mean when I say looking for a job, definitely I don't know whether these people will reply on LinkedIn or not. Okay, but you can try out your luck. Like you can prepare a very good resume, and then definitely you can just put him. Of course these people will share their HR number. Okay, they'll tell HR number they'll share, and you can connect to them because it all depends. Like those people are busy people. They are founder and chairman of such a group, large group, and definitely you'll not have a time to read your what's LinkedIn message. But if you're lucky enough, they may sometime give you their HR number or HR contact. This thing you can connect to them because once when I was doing my masters, I had done the same thing. There is one person by name. Okay, anyway, I think I should get is this thing. I don't know whether I'll get Faizan. Faizan, yeah. This Yeah, see, this was way back in 2018. Okay, when I had just finished my MTech, I was looking for a job. He was running a company in Bangalore. I mean, he's from Dubai. Okay, he was running a company in Bangalore by name Ketera. Now they have sold all those companies. So that back in 2018, I had written a mail to him. So he had messaged me that time that you drop a message to careers@kfinfra.com. They will revert with any vacant position. That's it. Of course there were, but I didn't join. They had a vacancies, but I didn't join. I got into teaching after that. But yeah, sometime you have to try all these things. Okay, that again you see it's message in 2018, almost five. It's been how much years? 7 years back. Okay, so that way, if you're someone looking for a job and all, no, these are the ways how you need to connect with the people. So I came across this profile 2 days back.
So yeah, someone who's looking for a job, definitely connect with such people. When you're writing a message, it has to be impactful. The moment he reads it, if he should keep on reading. If you directly say, sir, give me job, or sir, this is my resume, if any vacancies, let me know, they will not even reply, because you are pitching to someone who is the MD of a company having 30 years of experience. So your mail or your message should be something creative. Okay. Yeah, this is that company, Force SC. I told you, no, this is that company which offers a good package also. I'm just scrolling the LinkedIn. Let me check if any new vacancies I can find. Okay. Okay. Why it's coming? Okay. Force only it's coming. Not needed. Okay. Any questions or kuch questions? Say structure engineering. Yeah, structure engineering is the same thing here. See, these are the people you have to connect like this on the LinkedIn. You connect those people, drop your resumes, ask them for referrals, and this is how you have to apply for a job. Okay. Any other questions you have? Let me check out few other things uh, on this thing. What is that? On LinkedIn. Okay. और कुछ question नहीं है? ठीक है. Somebody who wants a job in Ahmedabad and all, Kirit Patel, you can connect. He is a founder and CEO at RNA PMC. They are into PMC, project management consultancies. People looking job somewhere in Gujarat, I mean Ahmedabad and all, you can try to connect. Okay. Okay. No more questions? No problem. So that's it. So I'm just looking for this thing. What is that? There was one vacancy. Okay, I think I should get somewhere from here. The notification I'll get. Wait. Um, okay, it's not available now. Okay. So how to make a good resume? यार तुम लोग मेरे वीडियो नहीं देखते हो, इधर आके फालतू में क्वेश्चन पूछते हो. गो टू माई चैनल, गो टू माई यूट्यूब चैनल. आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो. यू कैन गो एंड चेक इट. ठीक है, आप मेरे चैनल में जाओ, वीडियोस में जाओ, रेज्यूमे बाय सिविल ब्रेंस डाल दो. आपको एक वीडियो आएगा जो 20-25 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने सारे एक्सप्लेन करके रखा है. So you can, you know, yeah, watch that lecture and you can make your resume accordingly. Okay. Okay. Any other questions you have? So if you have, you can ask. I am just searching for one profile for a job because recently that put a job. There are a few vacancies in Dubai, and yeah, we'll see. If I get some other day, I'll do it. Okay. What happens? I'm connected with a lot of people, so I will not find it again. Once I miss it, I'll not find it again. Okay, leave it, not needed. How to make a good resume? Already I explained you. It's there in my, if you go to my YouTube channel, definitely it's explained. Okay, go and check it in my, on my YouTube channel. Okay. और कुछ क्वेश्चन है तो you can ask me, else another 5 minutes we'll wind up. अगर कोई भी बंदा, if you're watching my lecture for the first time, don't subscribe, watch my other videos on my YouTube channel. There are a lot of good videos, and if you feel the content is good, then you subscribe to my channel. Second thing, somebody who is interested to learn the stuff, who is interested to learn all these things in a more better way, these are the courses that I offer, and this is a QR code to download my Civil Brains app. uh, I like, these are the this is my app, this is a QR code, download it. I've given a free course for you, enroll in that, and then you see how I teach, and if you feel my content is good, definitely enroll in my other courses. These are the reviews given by the students. Yeah. Somebody asked that
सर मुझे ये जानना है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ सर, कैसे पता करें कि कौन से कंसल्टेंसी जेन्युइन और कौन सा फ्रॉड है, क्योंकि वैसे ही जानने का ताकि फ्रॉड ही बच जाए। देखो, जो नॉट ओनली दैट, जब भी कोई कंपनी में आप अप्लाई करते हो या कोई एचआर से कनेक्ट करते हो, अगर कोई बंदा तुम्हें जो पैसा पूछ रहे हैं, मान के चलो फ्रॉड है, सिंपल, दिस इज द इजी वे टू आइडेंटिफाई। अगर कोई बंदा तुमको जॉब पे लगाने के लिए, रेज्यूमे शेयर करने के लिए कोई बंदा पैसा ले रहा है, दैट मीन्स इट्स अ फ्रॉड, बस वहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है। Yeah, I don't have an idea about the Mumbai here. I stay in Bangalore, so I don't have an idea about Mumbai and all. So it's the best is speak with the people those are from Mumbai. Okay, so that those people can give you a better idea. So civil engineering need more struggle than other branch. Civil engineering need more struggle than other branch in the initial days, especially if you're working on a side job. After that, once you switch towards the office job, that is better. But struggle is there in all the field, not only in this. Life is all about struggle. There's nothing like easy life. Easy life is only in the movies. Okay. Rest life is all about struggle only. Okay. So depend how you enjoy that. Of course, I do agree. Side job is difficult only. At least, see, when I say difficult, at the age of 22, 23, 24, you'll not have much, you'll not have, I mean, you don't have any family or you don't have a wife or a kid. If you spend 10, 12, 13 hours on the site, I'm okay with that. But unless you are working in a good company, if you're working in a good company, let's say if you're doing some challenging projects, if you're doing some high-rise building construction, I think then you are working for 12, 13 hours. But if you're getting to learn a lot of new things and all, definitely do that. There's no problem with that. Okay. But once you work for 1, 2, 3 years, then you move towards the office jobs like QS, planning, project coordinator, and all. Okay. Yeah. It is told that to learn many things as a structure engineer, it is better to join a small company, but the duration of project closing is long in small companies, so we might learn less. So isn't it better to join MNC and get better paycheck? And in MNC, it is told that learn, we might learn little less. Yeah. So actually, what happens when you work for a big MNCs and all, there the work is divided. You'll not get to do everything right from the start to the end. So a few people will only do column and beam design. That's it. They'll never do the slab design. For the slab, they have another people doing. Few people will do only the superstructure. They'll do only slab, column, beam. Then finally, the footing and all is done by the other people. So that entire workflow which you are supposed to learn, that won't happen in the big companies. But when you join for a small firm, what happens? They don't have so much of people working. So let's say 4 or 5 people are there. So one person will have so much of responsibility doing the entire workflow right from planning stage, architecture planning, structure designing. In that, everything will do: slab, column, beam, slab, staircase, structure, footing design also he is going to do. Then even if there is no draftman, let us say, then even detailing also he should do. In AutoCAD, detailing he has to do. Big companies will not do any detailing. There are draftmen for that. You are taking my point now. So to learn the stuff, always this is good, which are all these things. Working in a small firm for 2 to 3 year of 2 to 3 years, you learn. After that, once you learned all these things and all, then you can apply for other big companies and all. That's it. ओके सर, हाईरस का कोर्स कब तक ऐड हो जाएगा कोर्स में? और मुझे ऑटो कैड सीखना है, तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर ऑल्सो ऑटो हाईराइज आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में ऐड होना चाहिए, बट अगेन डिपेंड्स बेस्ड ऑन माय अवेलेबिलिटी, बट होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई शुड डू इट। ठीक है, ऑटो कैड आई विल चेक इट आउट। ऑटो कैड का कोर्स इफ पॉसिबल मैं उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि वो दूसरा फैकल्टी का रिकॉर्डिंग है। लेट मी चेक इट आउट। सर प्लीज मी कॉम पिसा करोगी, ये क्या होता है? ये क्या है यार? सर प्लीज मैं बीकॉम पिसा करोगी, ये कौन सा लैंग्वेज है? हाँ, और रुपेश रंगे का कोर्स इज इनफ। सी इट्स नॉट ओनली द कोर्स, वो बंदा डेली लाइव भी आता है ना शाम के टाइम में, तो डेफिनेटली वो पूरा जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स है उससे पढ़ाता है। ठीक है, दैट इज इनफ यार। देखो, कोई भी कोर्स इज नॉट इनफ ऑलवेज। कोर्स एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे हम, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। तुम्हारा तुम्हारा
व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस, वो भी मैटर करेगा ना। ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स से ही कुछ होने वाला है। कोर्स हम आपको एक डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जाना है, ऐसा करने, अगर ये गलती आप साइड पे अगर ऐसे प्रॉब्लम फेस करोगे तो उसका सोल्यूशन क्या निकालोगे, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन दिस इज, आप अपने प्रोजेक्ट करोगे, आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप खुद उसका सोल्यूशन निकालोगे ना, तो दैट इज हाउ यू गो अप। इट्स नॉट कि कोर्स ले लिया तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोर्स से आ जाएगा, बट हम एक लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि एक गलतियां होगा तो इसको कैसे सुधारना एंड ऑल। जैसे मेरे पास मेरे जो कोर्सेस है, ऑल जिस साइट एग्जीक्यूशन कोर्सेस एंड ऑल, तो उसमें हम ये सारी चीजें कवर करते हैं ना। जो अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, तो साइट पे आपको कैसे काम कराना है, तो इसमें क्या क्या गलतियां, जैसे इसमें क्या क्या गलतियां हैं, तो मेरा जब मैं कोर्स पढ़ाता साइट एग्जीक्यूशन का, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये सारे अभी हो गया हमारा बीम का रिइंफोर्समेंट हमने लगा दिया, ये सब कटआउट्स हो गए, तो मैं आपको पूछूंगा इसमें मेरे को गलतियां बताओ, इसमें क्या गलतियां हैं। तो अगर ये गलतियां हो जाएगा तो इसको कैसे करना, भी यही वाला गलतियां हैं। इस ये जो बार है इसको कभी भी एल मोड़ना होता है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड डिजाइन नहीं किया होगा तो ये सब गलतियां साइड पे किया जाता है। फिर ये प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, राइट। ये सारे चीज हम अपने, अब जैसे लैपिंग वाला मैंने आपको, ये लैपिंग वाला पूछा था, लेकिन लैपिंग देखो गलत है ना, ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर सॉरी ऊपर वाला तो गलत है, इधर लैपिंग नहीं करना, पर इन्होंने कर दिया। अगर आप एक इंजीनियर हो, आप साइड पे चले जाते, आपको दे दिया, तो इसको कैसे, हम ये सारी चीज आपको सिखाते कोर्स में। अब जितना हमने सिखाने के बाद फिर आप तुम साइट पे जाओगे, ठीक है ना, तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर तुम कुछ नया चीज वहां पे सीखोगे, दैट इज हाउ इट इज। या मेरे साइट इंजीनियर में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बताया गया है, आई विल शो यू। अभी जो नया रिकॉर्डिंग है, दैट इज वाई मैं नया रिकॉर्डिंग वैसे ऐड कर रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है। देखो ये सारी चीज मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग ही दिखा दूंगा, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। देखो हम एकदम सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर मैंने बीच बीच में देखो क्विज भी लिया है इस बार, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा। क्विज लिया है, क्विज के साथ साथ आई हैव टेकन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे दूं, ठीक है, ये वाला सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा कि आप साइट इंजीनियर हो, तो साइट पे से एक मिस्टेक हो गया, तो आप क्या डिसीजन लोगे, आप कैसे साइट पे काम करोगे, दिस आर द थिंग्स आई हैव टेकन। इससे से बहुत सारे मैंने क्विजेस लिया है, ठीक है। एंड ये देखो पूरा स्लैब का सेंटरिंग है, तो इसमें हम प्रॉप्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इससे हर एक चीज, गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, ओके, गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, एवरीथिंग, इस बार ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो, तुम अगर 10 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जाके आओगे ना ऑफलाइन में, दे कांट इवन मैच व्हाट आई टीच इन माय ऑनलाइन कोर्सेज, बिकॉज इसको बनाने में अभी 5 साल लगे, 2020 से मैं बना रहा हूँ कोर्स। ओके, ये अभी फोर्थ टाइम मैं री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इट्स फोर्थ टाइम आई एम री रिकॉर्डिंग द लेक्चर। वो भी प्री रिकॉर्डेड सेशन कोई बंदा री रिकॉर्डिंग नहीं करता है। एक बार डाल दिया बस वो चलता रहेगा, पैसा आता ही रहेंगे, वो आपके बारे में नहीं सोचने वाले कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बट सिंस आई वांटेड टू इम्प्रूव द कंटेंट एंड ऑल, so that is why मैंने हर बार नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक्स को ऐड किया है। सो हैव मेड इट इन सच अ वे दैट, अगर आप मेरे कोर्स करने के बाद साइट पे चले जाओगे ना, नो बडी कैन क्वेश्चन यू। उस आगे वाला बंदा सोचते रहेगा ये यहाँ से ये इतना सब कैसे जान गया, राइट। सो दैट इज अ लेवल आई टीच इन माय साइट एग्जीक्यूशन कोर्स, तो उस लेवल में बना रहा हूँ, अभी हो गया और भी है। इस मंथ के एंड तक पूरा स्लैब का हो जाएगा। एक बार स्लैब का हो जाएगा देन यू कैन डू इट। या Yeah, Parikshit. Always better you start with a small firm, but it's not be a too small firm also, because in that small firm the problem is salary is a problem. But if you're not someone who is running behind the salary for the first 2 years, you are someone who wants to learn. Definitely look for a mid kind of companies who does some good commercial projects, all good commercial projects. Let's a school building and some conventional hall, some residential apartments and all, so you get a good exposure through those. या फिनिशिंग का देखो, फिनिशिंग का क्या है, फिनिशिंग का मैंने इन डेप्थ मेरे क्यूए किसी में कवर करके दिया है। मेरा जो क्यूए किसी वाला कोर्स है, ये जो फिनिशिंग वाले लेक्चर्स है ना यहाँ पे, इसमें बहुत इन डेप्थ है, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, क्यूए किसी का चार्ट, सब कुछ, जिप्सम प्लास्टरिंग हो गया, क्यूसी चार्ट फॉर पेंटिंग, टाइलिंग का वर्क, वॉल टाइलिंग का वर्क, ग्रेनाइट मार्बल हो गया। ये बहुत इन डेप्थ का है, पर इसमें बहुत सारे मैंने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया है। तो जब मैं फिनिशिंग पढ़ाऊंगा मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इन डेप्थ पढ़ाना लग जाऊंगा फिर मेरा क्यूए किसी का कोर्स और मेरे साइट इंजीनियर का कोर्स में दोनों फर्क ही नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, मेरा जो साइट इंजीनियर का कोर्स में भी मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट इस तरह से क्यूए किसी का चार्ट सब नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज ये सब मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, ये सब मेरे क्यूए किसी के चार्ट से।
तो पढ़ाऊंगा मैं क्यूए किसी का चार्ट्स पर, बहुत इन डेप्थ वाले में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट समझाऊंगा बैठ के क्यूए किसी में, आई टेक ईच एंड एवरी पॉइंट। बट साइट एग्जीक्यूशन में हर एक पॉइंट लूंगा तो फिर क्यूए किसी का कोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज वाई। देखो ये आपका पूरा क्यूसी चार्ट रहेगा, डेफिनेटली क्यूसी चार्ट सब में नहीं लेने वाला, और डेफिनेट दैट इज नॉट नीडेड, ये सर आपके क्यूसी के चार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब आपको साइट इंजीनियर में नहीं चाहिए, बिकॉज साइट इंजीनियर इज not supposed to do all these things. It's a work of a QA/QC engineer. So unnecessary, I'll not teach you that. बट यहाँ पे मैं आपको अच्छे रिकॉर्डिंग, इस बार मैं आपको MEP का ऐड कर रहा हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का भी ऐड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऐड नहीं किया था। लिटिल बिट अबाउट प्लम्बिंग वाज ऑलरेडी देयर, थोड़ा फायर फाइटिंग का एंड ऑल आई ऐड। ओके, दैट्स इट। After the course, will you take exam and give certificate to ascertain if student has learned? Exactly. See again, after the course, I'll take your interview so that I'll get to know what you have learned, how much I have taught, how much you are able to learn, and all. I'll do that. Now coming to the certificate, again, nonsense question, because certificate has no value. Only your knowledge, your skill has a value in the market. Nobody is interested to see your certificate. Okay, only your knowledge and skill is important. Okay, so I'll take interview, and after the interview I'll get to know how you are answering my questions. I'll get to know how much you've understood, so that way I'll give my genuine feedback to you. Certificate you get, but I don't recommend you to take a certificate because it's of no use. Neither anyone in the company is looking for a guy with a certificate. Nobody is interested to see a certificate in the company, nor any company will ask you for a certificate. They want experienced guy, they want a guy who has a technical knowledge. That's it. सर बेसमेंट डिटेल का भी कैसे कंस्ट्रक्शन होता है वो, एवरीथिंग इज कवर्ड, बेसमेंट ऑल्सो हैव कवर्ड। बेसमेंट कहाँ पे गया, ये लो बेसमेंट। इस बार मैंने बेसमेंट एंड ऑल मैंने लास्ट टाइम ऐड नहीं किया था, मैं अर्लियर, बिकॉज वो 3 साल पुराने रिकॉर्डिंग था ना, सो दैट टाइम वी डिडंट हैव एन आइडिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डेवलप द कोर्स। ठीक है, इस बार हमने बेसमेंट को भी ऐड कर दिया। तो ये सब बेसमेंट ही है, ये वाला एक बिल्डिंग लिया है मैंने, ऑल दिस आर माई बेसमेंट। ये आपका नीचे का बेसमेंट है, अलॉन्ग विद दैट ये भी आपका बेसमेंट का है। तो इस तरह से मैंने पूरा प्रैक्टिकल वीडियोस, दिस इज वन मोर प्रोजेक्ट, इसके नीचे बेसमेंट ही है। ठीक है, सो आई थॉट यू ऑल द बेसमेंट ऑल्सो, एंड बेसमेंट का ड्राइंग पढ़ना भी सिखा दिया। लिफ्ट का इस बार मैंने लिफ्ट का भी ऐड कर दिया, सम टैंक यूजी टैंक का भी ऐड कर दिया है। मिसलेनियस में इस बार हमने बिटुमेन कोटिंग का भी ऐड कर दिया है, और दुबई में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन सब होते हैं, उसका सब मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, या ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आप सोचोगे सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, एंड मेनी थिंग्स आपके रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी किया है। ठीक है, या तो ऐसे ऐसे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस भी रहेंगे। यू आर कॉल्ड एज एन कंसल्टेंट टू लुक आफ्टर अ कॉलम कास्टिंग टिल बैक फिलिंग एक्टिविटीज ओवर, हाउ विल यू हैंडल इट एंड व्हाट विल बी द थिंग्स यू विल टेक केयर। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कोर्स में, रिकॉर्डेड सेशन में, सो यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो ये सर आपके बेसमेंट वाले हैं। ठीक है, या एंड इसमें हमने गुड और बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वो भी लिया है। गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे कैसे आपको साइट पे काम करना है, एवरीथिंग, लैपिंग के बारे में, कहाँ पे लैपिंग करना है, कहाँ पे लैपिंग, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स। इस बार मैंने एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लिया है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का प्रोजेक्ट लिया है, सो दैट यू गेट गुड एक्सपोजर ऑन दिस। या इस बार जो जो लगा है सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, दैट्स इट। अनदर 10 मिनट्स, 12 बजे को एंड करेंगे। आप लोग सोते नहीं हो क्या? Okay, 8 people are there. Any doubt you have, you can. Okay, okay, we'll close it. Any questions you have, anything you have, you can ask. Definitely, again, I'll suggest you download my Civil Brains app. This is a QR code for that. Okay, through this you can download it. Enroll in my free course. Check how I teach. See the other courses. There's some 20% off going on my courses, and see how it works out for you. If you feel the content is good, definitely enroll in my complete courses. So that way you can gain good knowledge. And these are the reviews given by the students and all. There are many reviews, but of course, in one page I've added these reviews.
फ्लोरिंग में आरसीसी इज नॉट रिक्वायर्ड, डिपेंड करेगा कैसे बिल्डिंग क्या क्या बना रहे हो। अब छोटे मोटे घर बना रहे हो तो फ्लोरिंग में आरसीसी का जरूरत नहीं पड़ता है, नॉर्मल आप बेड कंक्रीट डाल दो। पर अगर कभी कभी आप बेसमेंट लगा रहे हो, बेसमेंट बना रहे हो और बेसमेंट में आपका पार्क कार का पार्किंग सब होता है, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ रीइंफोर्समेंट। या मान लो या बेसमेंट में अगर आपका कार का पार्किंग और हैवी लोड कुछ आएगा या कोई स्टोरेज के लिए आप यूज कर रहे होगे, in that case reinforcement is required, which comes under the RCC part. ठीक है, okay, 6 people enough, चलो, okay. So I'll close the live session, maybe after few days I'll come again, and definitely if you're not subscribed, subscribe to my channel, that will help me. And people those are online, download my Civil Brains app, check out the content, okay. Yeah, okay, okay, Irfan, okay, Irfan Parikshit, okay, chalo, good night, I'll wind it up.